जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या शतरुद्र संहिता अथ द्वादशोऽध्यायः। ऋषय ऊचु सूत जानासि सकलं वस्तु व्यास प्रसादत तवाज्ञातं न विद्येत तस्मात् पृच्छामहे व्ययम् लिंगं च पूज्यते लोके तत्त्वया कथितं च यत् ततथैव न चान्यन्द्वा कारणं विद्यते त्विह। बाणरूपा श्रुता लोके पार्वती शिववल्लभा एतत् किं कारणं सुत कथय त्वं यथा श्रुतं। सूत उवाच कल्पभेद कथा चैव श्रुता व्यासान्मया द्विज तामेव कथयाम्यद्य श्रूयतां ऋषि सत्तमा। पुरा दारुवने जातं यद्वतं तु द्विजन्मनां तदेव श्रूयता सम्यक् कथयामि यथा श्रुतं। दारु नाम वनं श्रेष्ठं तत्रासन् ऋषि सत्तमा। शिवभक्ता सदा नित्यं शिवध्यानपरायणा त्रिकालं शिवपूजां च कुर्वन्ति स्म निरन्तरं। नानाविद्यैस्तवैर्दिव्यैस्तुष्टुवुस्ते मुनीश्वरा ते कदाचिद्वने याता समिदाहरण्याय च। सर्वे द्विजर्षभा शैवा शिवध्यानपरायणा। एतस्मिन्नन्तरे साक्षात् शङ्करो नीललोहितः विरूपं च समास्थाय परीक्षार्थं समागत। दिगम्बरोऽति तेजस्वी भूतिभूषणभूषित स चेष्टामकारो ददृष्टां हस्ते लिङ्गं विद्यारयन्। मनसा च प्रियं तेषां कर्तुं वै वनवासिनां जगाम तद्वनं प्रीत्या भक्तप्रीतो हर स्वयं। तं दृष्ट्वा ऋषिपत्नस्ता परं त्रासमुपागता विह्वला विस्मिताश्चान्या समाजग्मुस्तथा पुनः। आलिलिङ्गुस्तथा चान्या करं धृत्वा तथा परा परस्परं तु संगष्टि संमग्नास्तास्त्रियस्तदा। एतस्मिन्नेव समये ऋषिवर्या समागमन् विरुद्धं तं च ते दृष्ट्वा दुःखिता क्रोधमूर्छिता। तदा दुःखमनुप्राप्ता कोह्यं तथा ब्रुवन्। समस्ता ऋषयस्ते वै शिवमाया विमोहिता। यदा च नोक्तवान् किञ्चित् सोऽवधूतो दिगम्बर ऊचुस्तं पुरुषं भीमं तदा ते परमर्षय। त्वया विरुद्धं क्रियते वेदमार्गविलोपित ततस्त्वदीयं तल्लिङ्गं पततां पृथिवीतले। सूत उवाच इत्युक्ते तु तदा तेश्च लिङ्गं च पतितं क्षणात् अवधूतस्य तस्याशु शिवस्यादृतरूपिण। तल्लिङ्गं चाग्निवत् सर्वं यददाह पुरस्थितं। यत्र यत्र च तद्याति तत्र तत्र दहेत् पुनः। पाताले च गतं तच्च स्वर्गे चापि तथैव च। भूमौ सर्वत्र तद्यातं न कुत्रापि स्थिरं हि तत्। लोकाश्व व्याकुला जाता ऋषयस्तेति दुःखिता। न शर्मलेभिरे केचित् देवाश्व ऋषयस्तथा। न ज्ञातस्तु शिवो येस्तु ते सर्वे च सुरर्षयः। दुःखिता मीलिता शीघ्रं ब्रह्माणं शरणं ययु। तत्र गत्वा च ते सर्वे नत्वा स्तुत्वा विधिं द्विजा। तत्सर्वमवदन् वृत्तं ब्रह्मणे सृष्टिकारिणे। ब्रह्मा तद्वचनं श्रुत्वा शिवमाया विमोहितान्
ज्ञात्वा ताशङ्करं नत्वा प्रोवाच ऋषिसत्तमान्। ब्रह्म उवाच ज्ञातारश्च भवन्तो वै कुर्वते गहितं द्विजा। अज्ञातारो यदा कुर्युः किं पुनः कथ्यते पुनः। विरुध्य एव शिवं देवं कुशलं क समीहते। मध्याह समये यो वै नातिथिं च परामृशेत्। तस्यैव सुकृतं नीत्वा स्वीयं च दुष्कृतं पुनः। संस्थाप्य चातिथिर्याति किं पुनः शिवमेव वा। यावल्लिङ्गं स्थिरं नैव जगतां त्रितये शुभं। जायते न तदा कापि सत्यमेतद्वदाम्यहम्। भवद्भिश्च तथा कार्यं यथा स्वास्थ्यं भवेदिह। शिवलिङ्गस्य ऋषयो मनसा संविचार्यताम्। सूत उवाच इत्युक्तास्ते प्रणम्योऽच्युर्ब्रह्माणमृषयस्व वै। किमस्माभिर्विदे कार्यं तत्कार्यं त्वं समादिश। इत्युक्तश्च मुनिशेस्ते सर्वलोकी पितामह। मुनिशास्तांस्तदा ब्रह्मा स्वयं प्रोवाच वै तदा। ब्रह्म उवाच आर्याद्य गिरिजादेवीं प्रार्थयन्तु सुराः शिवं। योनिरूपा भवेच्चेद्वै तदा तत्सिरथान् व्रजेत्। तद्विधिं प्रवदाम्यद्य सर्वें शृणुतु सत्तमा। तामेव कुरुत प्रेम्णा प्रसन्ना सा भविष्यति। कुम्भमेकं च संस्थाप्यं कृत्वाष्टदलमुत्तमं। दुर्वायवाङ्कुरैस्तीर्थोरिदीकमापुरेत्तत। वेदमन्त्रैस्ततस्तं वै कुम्भं चैवाभिमन्त्रयेत्। श्रुत्युक्तविधिना तस्य पूजां कृत्वा शिवं स्मरन्। तल्लिगं तज्जलेनाभिषेचयेत् परमर्षय। शतरुद्रीयमन्त्रेस्तु प्रोक्षितं शान्तिमाप्नुयात्। गिरिजां योनिरूपां च बाणं स्थाप्य शुभं पुनः। तत्र लिङ्गं च संस्थाप्य पुनर्श्रैवाभिमन्त्रयेत्। सुगन्धैश्चन्दनैश्चैव पुष्पधूपादिभिस्तथा नैवेद्यादिकपूजाभिः स्तोषयेत् परमेश्वरम्। प्रणिपातैस्तवै पुण्यैर्वादैर्गानिस्तथा पुनः। ततः स्वस्थनं कृत्वा जयेति व्याहरे तथा। प्रसन्नो भव देवेश जगदाह्लादकारक। कर्ता पालयिता त्वच्च संहर्ता त्वं निरक्षर। जगदाद्विर्जगद्योनिर्जगदन्तर्गतोऽपि च। शान्तो भव महेशान सर्वलोकांश्च पालय। एवं कृते विद्यो स्वास्थ्यं भविष्यति न संशय। विकारो न त्रिलोकेऽस्मिन् भविष्यति सुखं सदा। सूत उवाच इत्युक्तास्ते द्विजा देवा प्रणिपत्य पितामहं। शिवं तं शरणं प्राप्ता सर्वलोकसुखेप्सया। पूजितः परया भक्त्या प्रार्थितः शङ्करस्तदा। सुप्रसन्नस्ततो भूत्वा तानुवाच महेश्वर। महेश्वर उवाच हे देवा ऋषय सर्वे मद्वचः शृणुतादरात्। योनिरूपेण मल्लिङ्गं धृतं चेत् स्यात् तदा सुखं। पार्वतीं च विना नान्या लिङ्गं धारयितुं क्षमा। तया धृतं च मल्लिङ्गं धृतं शान्ति गमिष्यति। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा ऋषिर्भिर्देवै सुप्रसन्नैर्मुनीश्वरा। गृहीत्वा चैव ब्रह्माणं गिरिजा प्रार्थिता तदा।
प्रसन्नां गिरिजा कृत्वा वृषभध्वजमेव च पूर्वोक्तं च विधिं कृत्वा स्थापितं लिङ्गमुत्तमं मन्त्रोक्तेन विधानेन देवाश्च ऋषयस्तथा चक्रुः प्रसन्नां गिरिजां शिवं च धर्महेतवे समानर्चुर्विशेषेण सर्वे देवर्षयः शिवं ब्रह्मा विष्णुपरे चैव त्रैलोक्यं सचराचरं सुप्रसन्नः शिवो जातः शिवा च जगदम्बिका धृतं तथा च तल्लिङ्गं तेन रूपेण वै तदा लोकानां स्थापिते लिङ्गे कल्याणं चाभवत्तदा प्रसिद्धं चैव तल्लिङ्गं त्रिलोक्यामभवद्विजा हाटेशमिति विख्यातं तच्छिवा शिवमित्यपि पूजनात् तस्य लोकानां सुखं भवति सर्वथा इह सर्वसमृद्धि स्यान्ना सुखवहाधिका परत्र परमा मुक्तिर्नात्र कार्या विचारणा। इति श्री शिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहितायां लिंगस्वरूपकारवर्णनं नाम 12ोऽध्यायः। जय गुरुजी।